Dear learners, you're most welcome in today's class. Today we will discuss about some important aspects of chapter Biomolecules. So let us understand that what are the biomolecules. The organic molecules, the organic compounds which constitute and execute the living system are called biomolecules. यानी ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, जिनको इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं और फंक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा गया बायोमोलिक्यूल. देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. लेट अस सी. Number 1 is carbohydrate. Carbohydrates are a kind of biomolecules. Second is proteins, then vitamins and nucleic acids. So these are the major kind of biomolecules which play an important role in the living system. So let us come to know about the chemistry of these category of compounds. So first of all we discuss about carbohydrate. So carbohydrates, before I move further, I would like to tell you just to look at the structure of glucose. Here I am drawing the structure of glucose. Okay, from here we will get the definition of the same. ठीक है, इसकी definition भी हम लोग इसी structure से निकालेंगे. Carbon, second carbon, then this second carbon OH, then H, third carbon, here we have H, then OH, fourth carbon OH, H, fifth carbon OH, H, and the sixth carbon is like this. Okay, so this is the structure of glucose. Fischer structure. Fischer has explained this open structure for glucose. Now you look at whether it is aldehyde or ketone. You look at the carbon number 1. Yes, definitely it is what? It is aldehyde, CHO. And how many hydroxy groups are there? This is one hydroxy group, 2, 3, 4 and 5. A large number of hydroxy group is present, right? As well as if you look at this carbon atom, second carbon atom, so one of its valency is being satisfied by the aldehyde group, one of the valency is satisfied by the OH group, one of the valency of this carbon is satisfied by the whole content of the carbon third attached chain, and one of the valency is satisfied by hydrogen. That means कि this carbon is chiral carbon. ये कार्बन कैसा है? chiral carbon कहा जाता है. क्यों chiral carbon कह रहे हैं? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज कार्बन की वो अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं. सिमिलरली अगर आप इस कार्बन को देखते हैं, देन टू इट इज, ये भी कैसा होगा? कायरल कार्बन होगा. दिस कार्बन अगेन कायरल कार्बन ये होगा, एंड दिस इज अगेन द कायरल कार्बन. ये कैसा कार्बन है? इसमें कायरल कार्बन है. ठीक है बेटा, कायरल कार्बन प्रेजेंट है. तो हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर देयर? 1, 2, 3 and 4. These are the 4 chiral carbon atoms in the glucose. Now just we try to derive the structure based upon these information. So it obviously it has been observed that
the compounds or the organic molecules which contain the chiral carbon atoms, they show optical activity, means they are optically active compounds. Okay, so here we say the polyhydroxy optically active, just because of this nature, chiral nature, the optically active polyhydroxy aldehydes or ketones are called carbohydrates. Further, you can say that there is a category of compounds. There are a large number of compounds which are of course, they are the polysaccharides. They are the polymer of monosaccharide units, and when they are hydrolyzed in acidic medium, they produce a large number of such units. So कार्बोहाइड्रेट्स हम समझ पाए कि क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर इन कार्बोहाइड्रेट्स में कितना, कैसे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, ये सब बातें हम लोग जानेंगे। फिर से हम बता दें आपको कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और the compounds which on hydrolysis produce such units are called carbohydrates. Okay, now coming to the classification of carbohydrate, just take examples also. Yeah, we take examples. For example, we can say glucose, fructose, then starch, lactose, maltose, and cellulose, etc. So these are the most common example of carbohydrates. Let us come to know about the structure out of these compounds. In our syllabus, the structure of glucose, some properties of glucose, structure of fructose as a straight chain, as well as the cyclic ring structure we have to study. We have also we have to study about the starch in detail, lactose, maltose, and cellulose. So one by one we will be looking for it. Okay, so now here we can say the carbohydrates are also called carbohydrates also called saccharides. They are also called saccharides after the Greek word saccharon, that means sweet to taste. So saccharides. So this name has been given to the carbohydrates. Now, very important point here, we found that there are certain carbohydrates which are sweet to taste. They are called sugars. Simply हम लोगों को sugars कह देते हैं. So if I just want to write about the sugars, what are sugars? The carbohydrates which are sweet in taste, are called sugars. इनको sugars कहेंगे.
ठीक है, स्वीट टेस्ट में जो है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लूकोज ले लें, इट इज स्वीट इन टेस्ट, तो डेफिनेटली वी कॉल इट शुगर। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, देन वी कैन से सुक्रोज, जिसको केन शुगर कहते हैं, दिस इज केमिकली सुक्रोज, एंड लैक्टोज। यस, लैक्टोज इज द शुगर फाउंड इन मिल्क। ये मिल्क में होता है एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीटनेस ऑफ मिल्क, presents lactose. Now the other category means the carbohydrates which are not sweet in taste, they are called non-sugars, and in non-sugars we get starch. Starch is non-sugar. If I talk cellulose, this is non-sugar. Carbohydrates are they are carbohydrate, definitely they are carbohydrates, but not the sugars. इनको हम sugars नहीं कह सकते। होप हम ये बातें क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वी come across the classification and then come back to the structure of glucose in detail. Classification. Let us see. Classification of carbohydrates. On the basis of the number of hydrolysis units obtained, on the basis of the number of hydrolysis units obtained after hydrolysis, the carbohydrate has been classified as monosaccharide, monosaccharides, then disaccharides, and it would be better if I write monosaccharide then oligosaccharide, that would be better. Oligosaccharides, and at the last we have polysaccharide. Polysaccharides. Let us try to know one by one in detail. What are monosaccharide? Here, very important, look at it is mono. Mono means one. Saccharides, saccharide that is related to sugar, means they have only single unit in their composition. इनमें जो भी होगा सुगर की केवल सिंगल यूनिट होगी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोसैकराइड। सिंगल यूनिट में आ जाता है ग्लूकोज, आ जाता है फ्रक्टोज, आ जाता है। तो अब देखो इसको कैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस डिफाइन करेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। सो वी हैव क्लासिफाइड द कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ the number of saccharide units, number of monosaccharide units obtained. So if I talk about the hydrolysis of monosaccharide, so we say कि on the monosaccharide, in the monosaccharide no hydrolysis takes place.
नो हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस ही नहीं होनी है, इसका मतलब जैसा ये कंपाउंड था एज इट इज हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया हाइड्रोलिसिस जब नहीं हुई तो दे आर कॉल्ड द सिंपलेस्ट सैकराइड्स एंड नेम्ड एज मोनोसैकराइड्स। ओके, अब आते हैं ऑलिगोसैकराइड्स। Oligosaccharides are those carbohydrates which produce 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis, and polysaccharides are those carbohydrates which produce more than 10 monosaccharide units. More than 10 monosaccharide units. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल की। तो इनमें एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है ग्लूकोज, और हम इनमें कह सकते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, अगर हम ओलिगोसैकराइड की बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं सुक्रोज। यहां पे सुक्रोज आ जाएगा जो कि डाइसैकराइड है। ओके, तो जो डाइसैकराइड्स हैं वो दरअसल ओलिगोसैकराइड में ही आते हैं। डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, वो सब ओलिगोसैकराइड के ही पार्ट हैं। सो सुक्रोज, देन वी कम अक्रॉस लैक्टोज, and we come across maltose. These all are considered as oligosaccharides. However, they are under the category disaccharide. ठीक है, अब यहां पे आते हैं। So here polysaccharide, example of polysaccharide are starch। यहाँ पे स्टार्च हो सकता है जो कि हम एक पॉलीसैकराइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरा है सेलुलोज। ठीक, तो ये बातें हो गई रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स कितने हैं उस पर बेस्ड ये हम लोगों ने स्टडी कर ली कि कितने टाइप का कार्बोहाइड्रेट हमें मिला। अगर जीरो यानी नो हाइड्रोलिसिस हो तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकराइड, एंड इफ इट इज प्रोड्यूसिंग मोनोसैकराइड यूनिट्स 2 to 10 units, then it is oligosaccharide, and finally more than 10 hydrolysis unit, they are called polysaccharides. Okay, thank you, God bless you.